Sneezing problem, yes, it will go up because the body's heat building capacity is weak. The heat building capacity of body is weak. That is why, uh, and the tolerance is also weak. So it's basically histamine release, which is uh, actually consuming certain aspect, creating toxin, and the body is trying to throw it out. है ना, बॉडी में जैसे ही मेटाबॉलिक हीट increases through kumbhak, and you'll see slowly, steadily, it will go away completely. See, you didn't have Parkinson earlier in your life, so why it happened? Why couldn't you control it? So when you say in how many days, usually again this is a question regarding medicine. If you ask your doctor how many days medicine can cure Parkinson, what will the answer? No, it cannot be cured. Why you are taking the medicine then? But yes, different body and different condition can benefit in different timelines. If it is a young body, the recovery strength is more, less medicine intake. The person may remember in just 1 month to 1.5 months. But if the body state is not good, still the person will recover. Let me give you a deal. If you recover in 3 years, you want to take it or leave it? You may recover earlier, you may recover in 3 weeks also. But then, if you recover in 3 years, is there any other way through which you can recover? No. Is there a money back guarantee? Why should we give money back guarantee when it all depends on your commitment and your practice and your body's state? हम तो आपको मेथड सिखाने के पैसे ले रहे हैं ना, क्लास करने के पैसे ले रहे हैं, उसके लिए पैसे ले रहे हैं ना, तो मनी बैक गारंटी क्यों देंगे हम? इसका रीजन तो बताइए कि व्हाई शुड वी गिव मनी बैक गारंटी व्हेन सपोज आपको सिखा दिया, आपने किया नहीं, या आपने अपनी हालत वैसे ही खराब करके बिकॉज ऑफ वॉट एवर आइडिया यू हैव, 50 चीज़ें कर रहे हैं, उसमें बहुत मेडिसिन से खराब हालत कर दी है, एंड यू से कि नहीं जी मैंने तो 10 दिन किया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा. ना, इट डजंट वर्क लाइक दैट. हमने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया ना अपना पूरा एफर्ट, तो हम तो आपको सिखाने के जो ले रहे हैं पैसे, वो उसके लिए ले रहे हैं. हाँ, ये एक चीज़ हो सकती है कि सो मेनी सेंटर्स, हाँ वो भी बता रहा हूँ, वो क्लेम तो क्या करना, मैंने तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझाया. वॉट एवर आई एक्सप्लेन्ड, इट इज़ नॉट अ क्लेम ऑफ समथिंग कि मैं आपको दवाई दे दूंगा ये तो आप ठीक हो जाओगे, या डाइट प्लान दे दूंगा तो ठीक हो जाओगे. मैं तो बताया कि वो सब काम करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा वो भी बताया. आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम एंड माई एफर्ट इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड. आपको करना है नहीं करना ये आपको डिसाइड करना है. वी आर नॉट पुशिंग यू, हम तो आपको समझाने में अपनी पूरी एनर्जी डाल रहे हैं. अगर आपको नहीं समझ में आता, वेल एंड गुड, दुनिया घूम के आओ, फिर वापस आएंगे कुछ समय के बाद में.